Dear students, Assalamu alaikum. This is your social studies class 5. So today we discuss about the greenhouse and the greenhouse effects. So अॼु असां ग्रीन हाउस जे बारे में पढ़ंदासीं, उन्हनि जा कहिड़ा असरात आहिनि उन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं. So let's start. So we have a question, what is a greenhouse effect? So what is a greenhouse? What is a greenhouse effect? And the greenhouse effect is created. The fourth question is how lessen the negative effect of human activities on a climate. And the question number 5 is what is the result of global वार्मिंग. सो वन बाय वन असां क्वेश्चन डिस्कस कंदासीं. सबका पहिरियों क्वेश्चन आहे असां वटि व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट छा आहे उन जे बारे में पढ़ंदासीं. ग्रीन हाउस इज़ एक्चुअली अ रूम मेड ऑफ अ गिलास इन विच द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट छा आहे. ग्रीन हाउस इफेक्ट हिकिड़ो रूम आहे, रूम टाइप हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे जंहिंमें असां टेम्परेचर ऐं ह्यूमिडिटी खे कंट्रोल कंदा आहियूं. Okay, so now the second question is what is the greenhouse effect. Greenhouse effect chai. Greenhouse effect is the effect due to the greenhouse. So let's start the reading. The rise in the proportion of heat absorbing the glass like a carbon dioxide, methane increase the temperature of the lower part of the atmosphere is called greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट छा के चवंदासीं कि जेको ग्रीन हाउस ठहंदो त उहो छा कंदो, उहो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथीन एंड द टेम्परेचर छा कंदो, जेको ज़मीन वारे पासे ते स्टोर करे छॾींदो टेम्परेचर खे, गर्मी खे, कार्बन डाइऑक्साइड खे एंड मेथीन गैस खे, जेका काज़ कंदी ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट छा के चवंदासीं, अहिड़े इफेक्ट खे जंहिंमें टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन खे स्टोर करे सघंदी. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ क्रिएटेड. ग्रीन हाउस खे कीअं ठाहियो वञे. Yes, greenhouse effect is created. Greenhouse effect is created by the increasing the amount of carbon dioxide and the methane in the atmosphere within the turn of increase in the temperature of low atmosphere. So जेको असांजो ग्रीन हाउस इफेक्ट आहे उनखे कीअं ठाहे सघिजे थो पियो त कार्बन डाइऑक्साइड खे, मीथेन खे एटमॉस्फेयर में स्टॉप कराए उनखे इंक्रीज़ कराईंदासीं, टेम्परेचर उनजो इंक्रीज़ थी वेंदो लो एटमॉस्फेयर ते. छा थींदो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट खे कीअं ठाहींदासीं असां. हाउ वी क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. वी क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जी मदद सां, मीथेन जी मदद सां, कंहिंमें एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर खे वधाईंदासीं लो एटमॉस्फेयर में त असांजो ग्रीन हाउस इफेक्ट ठही वेंदो. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ लेसन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अ क्लाइमेट. सो जेके इंसाननि जूं मुदाख़लत आहिनि या इंसाननि जूं हरकतूं आहिनि उहे असां कीअं घटाए सघूं था पिया, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जा जेके नेगेटिव इफेक्ट्स आहिनि उहे कीअं घटाए सघूं था पिया. So the negative effect of human activities on a climate is a lessened by the planting more and more trees, by the keeping environment clean and the reducing amount of hazards and the chemicals from the factories. So जेको माण्हुनि जूं जेके नेगेटिव हरकतूं आहिनि या माण्हुनि जूं जेके ग़लतियूं आहिनि उहे कीअं घटाए सघजंदियूं पियूं, क्लाइमेट खे कीअं साफ़ु रखे सघिजे थो पियो. बाय द प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, वधि खां वधि वण हणंदासीं त असांजो क्लाइमेट में जेको डिसऑर्डर आहे या जेका ख़राबी थिए थी पई उहा घटाए सघिजे थी पई. एंड अनदर इज़ बाय द कीप द एनवायरमेंट क्लीन बाय द रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ हैज़र्ड्स, केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज़. अच्छा, ॿियो कीअं घटाए सघजनि था पिया त जेको फैक्ट्रीज़ मां ख़राबु क़िस्म जा केमिकल निकिरनि था पिया उन्हनि खे घटि इस्तेमालु कयूं ऐं पंहिंजी आबहवा खे साफ़ु रखूं त इन सां बि असां क्लाइमेट खे साफ़ु रखी सघूं था पिया. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जेका आलमी तपिश आहे इन जो छा रीज़न आहे या इन जो छा सबबु आहे. एज़ द रिज़ल्ट, आंसर इज़ एज़ द रिज़ल्ट of global warming the polar caps will melt and the heavy rains will be observed, with turn will rise the level of sea causing the floods. It will also affect on the agriculture and the some species of animal will extinct.
छा थींदो कि ग्लोबल वार्मिंग जे करे जॾहिं गर्मी वधी वेंदी, तपिश वधी वेंदी असांजे अर्थ जे ग्लोब ते, त उन सां छा थींदो कि हिकु त जेको पोलर कैप्स आहिनि, असां वटि जेके बर्फ़ आहे उहा पिघलजी वेंदी ऐं उन जे पिघलजण सां असांजे जेके समुंड आहिनि उन्हनि में सतह पाणी जो वधी वेंदो, जंहिंसां ॿोॾि अचण जो सबबु थी वेंदो ऐं जेको सबबु बणिजंदो असांजी एग्रीकल्चर खे तबाह करे छॾींदो ऐं जेके कुझु ख़ासि क़िस्म जा जानवर आहिनि उहे उन में ॿुॾी मरी वेंदा। सो ग्लोबल वार्मिंग जे करे हिकु त असां वटि ॿोॾि अची वेंदी एंड एग्रीकल्चर जेके असांजा फसल हूंदा उहे तबाह थी वेंदा ऐं असांजा जानवर मरी वेंदा। So here we have a long question, B section. So first of all we have a long question, the greenhouse effect. What is the greenhouse effect? So let's start the greenhouse effect. Chai due to the greenhouse effect the temperature rising on the earth. Okay, greenhouse जे करे जेको असांजे गर्मी पद आहे ज़मीन ते उहो वधी रहियो आहे, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इहो सबबु बणिजे थो पियो आलमी तपिश जो या आलमी जेका गर्मी पैदा थिए थी पई असांजी यूनिवर्स में। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग आर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट। सो द ग्रीन हाउस जे करे जेका ग्लोबल वार्मिंग थिए थी पई उहा कंटिन्यूसली लगातार असांजी क्लाइमेट जेका आबहवा आहे उनखे मुतासिर करे थी पई। एज अ रिज़ल्ट द मेल्ट्स स्नो पोलर कैप्स, जंहिंजे सबबु छा थो थिए कि बर्फ़ असांजी पिघलजे थी पई माउंटेन्स तां एंड घणी बरसाति पए थी पई। ओके, घणी बरसाति थियण सां छा थो थिए कि सीज़ ते जेका असांजे समुंडनि में जेको पाणी जी सतह आहे उहा वधी थी वञे, कोस्टल एरियाज़ विल ड्राउन आउट एंड द मैनी चेंजिस विल अकर। असांजा जेका ॻोठ वारा इलाइक़ा आहिनि उहे ॿुॾी था वञनि पाणी में एंड ॿिया बि खोड़ सारियूं चेंजिस अचनि थियूं पियूं असांजी आबहवा में। अच्छा, मैनी स्पेशीज़ ऑफ द लिविंग थिंग्स विल एक्सटिंक्ट। खोड़ सारा स्पेशीज़ जेके आहिनि जानवर आहिनि या जेके असां वटि जीत आहिनि इंसेक्ट्स आहिनि उहे बि इन ॿोॾि जे करे ख़तमु थी था वञनि। इट विल हैव द इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। उन जो जेको असरु थिए थो पियो ॿोॾि अचण जो असांजी फसलनि ते बि थिए थो पियो, असांजूं सभु फसलूं बि तबाह थी थियूं वञनि। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वी लेसन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। असां ग्रीन हाउस इफेक्ट खे कीअं घटाए सघूं था पिया? सो आंसर इज़ we can lessen the negative effects of human activities on the climate through the following individual and social measures। असां उन्हनि ग्रीन हाउस इफेक्ट सां जेको ग्लोबल वार्मिंग थिए थी पई उनखे कीअं घटाए सघूं था पिया? उनखे ईअं घटाए सघूं था पिया त जेके असां ग़लतियूं था कयूं या असां जेके ग़लति क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ कयूं था पिया, सपोज़ कयो कि जेके ट्रीज़ कटंदा पिया या आबहवा खे ख़राबु कयूं था पिया, उन्हनि शयुनि खे घटाइण सां असां क्लाइमेट ते जेको ग्रीन हाउस जो इफेक्ट आहे उनखे रिड्यूस करे सघूं था पिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज़िस। छा था करे सघूं? सभ खां पहिरियों असां पंहिंजे आबहवा खे साफ़ु रखंदासीं त उन सां छा थींदो कि असां बीमारियुनि खां बची वेंदासीं। सेकेंड वन पॉइंट इज़ द लेसन एयर पॉल्यूशन, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ॿियो असांखे वधि खां वधि वण हणनि खपनि। सो we stop the trees, we stop the very dangerous for the human lives and the environment। सो छा थींदो कि असांखे वण वधि खां वधि हणनि खपनि ऐं उन्हनि खे कटणु न खपे। ऐं ॿियो छा आहे? अच्छा, ॿियो इहो आहे कि एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी स्टॉप्ड बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। जेके एटॉमिक एक्सपेरिमेंट आहिनि, एटम ते जेके एक्सपेरिमेंट थियनि था पिया उहे घटि खां घटि करणु खपनि, छो त उहे तमामु घणो ख़तरनाक आहिनि फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड आल्सो द एनवायरनमेंट। इंसाननि जे लाइ बि तमामु ख़तरनाक आहिनि ऐं माहौल जे लाइ बि ख़तरनाक आहिनि। So second point, other point is the petroleum gas coal must be used a little as possible। ये जेको पेट्रोल आहे, गैस आहे या कोयलो आहे इहो घटि खां घटि इस्तेमालु करणु खपे इंडस्ट्रीज़ में ऐं फैक्ट्रीज़ में एंड असांजी ट्रांसपोर्ट में बि जेतिरो घटि थी सघे ओतिरो घटि यूज़ कयूं। ओके, द थर्ड वन पॉइंट इज़, लास्ट पॉइंट इज़ the poisonous gases produced the chemical factories must be controlled through the various scientific methods। अच्छा, जेके असांजे फैक्ट्रीज़ मां ख़तरनाक गैसूं या मादा निकिरी रहिया आहिनि उन्हनि खे बि कंट्रोल कयो वञे साइंटिफिक मेथड सां, जीअं असांजी आबहवा घटि खां घटि ख़राबु थी सघे। सो these are the long questions, so let's move toward the fill in the blanks। So here are the fill in the blanks।
So the first one is a greenhouse effect, or the greenhouse is actually a room made of a glass. Greenhouse जो कौन हुआ है वो गिलास जो ठहरा हुआ है. Fill in the blanks. Is due to dash the temperature rising on earth. Due to the greenhouse effect, temperature is rising on the earth. Greenhouse effect जे करे temperature अर्थ जी सतह ते वधी रहियो आहे. Fill in the blanks. Number third is the greenhouse effect dash are the bringing change in the climate. The answer is global warming. So the fourth one is dash is experiments must be stopped because they are very dangerous for the human life and environment. So the answer is atomic experiments. The fill in the blanks. Number 5 is the preference should be given to dash the public transport. असांखे तरजीह ॾियणु खपे public transport ते. So here the option D is the tick the correct or the true statements and the cross the wrong one. So the tick mark questions. So first one is that due to the increase of gases in atmosphere, the greenhouse effect is created. Yes, this is a correct. Second one is the rising of temperature on earth is called global warming. अर्थ जी सतह ते जो टेम्परेचर वधी रहियो आहे उनखे ग्लोबल वार्मिंग चइबो आहे. ठीकु आहे, इहो बि सही आहे. एज़ द रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन क्लाइमेट मेनी स्पेशीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स विल बिकम एक्सटिंक्ट. यस, त क्लाइमेट जे वधण सां असां जूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके जानवर आहिनि या इंसेक्ट्स आहिनि उहे ख़तमु थी रहिया आहिनि. ठीकु आहे, इहा बि ॻाल्हि सही आहे. द फोर्थ पॉइंट इन द लेसन एयर पॉल्यूशन वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़. एयर पॉल्यूशन के घटाइण लाइ असांखे वण पोखणु खपनि. यस, दिस इज़ आल्सो करेक्ट. पेट्रोलियम गैस एंड कोयल शुड बी यूज़्ड एज मच एज पॉसिबल. नो, दिस इज़ अ रॉन्ग. असांखे पेट्रोल गैस एंड कोयल घटि खां घटि इस्तेमालु करणु खपे. दिस इज़ अ रॉन्ग. ओके, सो इन ऑप्शन ई इज़ इन सर्किल द राइट आंसर्स. सो सही जवाबनि खे निशान लगायो. Question number 1 is the greenhouse effect is actually room made of glass. Yes, this is the correct answer. So second one is the due to the greenhouse effect the temperature is rising on the earth. Yes, this is also correct, that due to the greenhouse effect the temperature is rising on the earth. So the third one is due to the greenhouse effect and the global warming many species of living things will become extinct. Yes, this is also correct. Question number 4 is we can dash the effects of human activities on climate. So we can lessen असांखे activities घटाइण खपनि climate खे सही रखण लाइ. So 5 number is the nuclear experiment must be stopped because they are very dash for the human lives and the environment. Yes, these are the dangerous. The correct option is dangerous. So here last question is match the following columns. So the columns match करना है. First one is the greenhouse effect. Greenhouse effect क्या है? The temperature and humidity are controlled. Okay. And the second one is that due to greenhouse effect जे करे gases absorb heat and the temperature rises. So greenhouse effect जे करे heat and temperature में जेके gases हूंदियूं आहिनि उहे absorb थी पियूं आहिनि. Okay. The third one is the rising temperature on earth is called global warming. Global warming चइबो आहे. So the fourth one is the melting snow of polar caps and the mountains are and heavy rainfalls will rise the level of sea. Okay, this the correct answer is छा थींदो कि जंहिंमहिल पोलर कैप्स असांजा पिघलजी वेंदा गर्मी जे करे त असांजी सी लेवल्स वधी वेंदा ऐं असां वटि ॿोॾि अचण जो ख़तरो थी वेंदो. ओके, द लास्ट वन इज़ द पॉइज़न्स गैस प्रोड्यूस द केमिकल फैक्ट्रीज़. जेके ख़तरनाक गैसिस आहिनि, जेके केमिकल रिएक्शंस आहिनि जेके प्रोड्यूस कनि था पिया फैक्ट्रीज़ मां, दे मस्ट बी कंट्रोल्ड थ्रू द वेरियस साइंटिफिक मेथड्स. त जेके उहे ख़तरनाक गैसूं आहिनि ऐं केमिकल आहिनि त उन्हनि खे साइंटिफिक मेथड सां कंट्रोल कयो वञे त जीअं असांजी आबहवा ख़राब न थी सघे. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल साइंस. प्लीज़ repeat these questions and note in your notebooks. Okay, thank you for listening.